चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. So a weightless pulley is there. देखो pulley is there, is attached to the double inclined plane, frictionless surface. The tension the string will be. So देखो two blocks are there. One is 4 kg, one is 1 kg. Okay, this is 60 degrees. This is 30 degrees. They both are inclined plane. He's asking find the tension in the string. I'll give you options. Find the tension in the string. देखो जोशित, फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच वन beside में. देर ओनली ड्रॉ करो एंड चेक करो whether this block will slide up, whether it is like slide with this direction or this direction. Okay, so what are the forces acting on it? Tell me Joshit, either what are the forces? Whenever inclined plane is there, one force is mg sin 60. I told you inclined plane mein we have two forces. We should not draw mg. Always two components we have to split. One is mg sin 60 and downwards is mg cos 60. Okay, but we want tension, right? इसी direction में चाहिए ना, so one force is enough. Okay, and here tension T. देखो same string same tension and इसका tension T and इधर gradual force कितना act होगा? mg, this is cos 30 sin 30, right? mg sin 30 इस inclined plane में 60, right? So mg sin 60. m is 4 kg, g is 10 and sin 60. हाँ Sir, option 1. देखेंगे. हाँ, now here this direction force कितना होगा कैलकुलेट करो, इधर कैलकुलेट करो. which one is more force, उसी डायरेक्शन में acceleration will be there. Okay, so इधर कितना है? m is 4 into 10 into root 3 by 2. So 2 to जा 20 root 3. हाँ, इधर क्या आएगा? 1 into 10 into sin that is 1 by 2. So it is 5 Newton. So which force is more? This force is more, right? This direction force is more. That's why आपको क्या आएगा? इधर acceleration इस तरफ जाएगा a and a ऊपर जाएगा acceleration a. Okay. Now apply the each and every body free body diagram for that one. Net force equal to ma लगाने का, right? Net force equal to ma. आया प्रणव आपका आंसर? Which option? So Monica, like T minus mg sin 30 is equals to ma. हाँ, आप सॉल्व करो, जो आते हैं सॉल्व कर लो, नहीं आते तो देखो. ओके, नेट फोर्स इक्वल टू में लगेगा. देखो तो देखो आपको एक्सेलरेशन डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव यू शुड टेक. सो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में द टी इज पॉजिटिव, राइट? सो टी माइनस नेट फोर्स दिस माइनस दिस वन mg sin that is how much you got? 5, right? t minus 5 is equal to mass into acceleration. Mass is 1 into a, right? So t minus 5 is equal to a. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला इसका देखो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में यू टेक एज पॉजिटिव. सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग हियर? 20 root 3. सो 20 root 3 minus t is equal to ma 4 into a. नो सॉल्व एंड फाइंड टेंशन. ए की जगह में सब्स्टिट्यूट दिस वन हो जाएगा. कितना है आंसर? So can we use the formula acceleration Net force equal by to net m2 mass. minus m1? m1 minus m2. So m2 minus m1 g by m1 plus m2. m1 plus m2 ओके. नेट फोर्स कौन सा है? 20 root 3 minus 5.
by net mass. See, acceleration formula you can use shortcut. If you don't want to do this one, acceleration formula क्या है? Net force by net mass. Net force को देखो मैं ये totally blocks को सीधा लेके आ रहा हूँ. So one system ले रहा हूँ. So what is net force? Sir, I got 20 A is equals to 20 root 3 by 9. 5 by m1 plus m2 5. So if I take 5 common, so ये acceleration कितना होगा? 4 root 3 minus 1, right? नो सब्स्टिट्यूट इधर इधर भी आ जाएगा. और एक ही जगह में लगा ना टेंशन आ जाएगा. क्यों उधर क्यों टेंशन ले रहे हो? So if you get Acceleration T जरूरत ही minus नहीं. 5 equal to A, you'll get 20 root 3 is equals to 9A. Which one? Which one? See, I am using net force by net mass. Net force कौन सा है? कितना? This minus this. Okay. By net mass. Net mass is 4 plus 1 is 5. हाँ. So ये सब्स्टिट्यूट करो कितना आएगा आंसर? Which option you got, Pranav? Manav? Sir, I got 4 root 3 minus 1. Which option? This one? C. C, yeah. No, D. D. आपको मानो? I didn't get, sir. I got 20 root 3 is equals to 9A, but after that I don't know what to do. ए के जगह में सब्स्टिट्यूट करो. वी इज टेलिंग टू फाइंड टेंशन, राइट? ए के जगह में सब्स्टिट्यूट टी माइनस 5. Oh. So 20 root 3 minus t is equal to 4 times of t minus 5. So कितना होगा? 20 root 3 minus t is equal to 4t minus 20. So कितना? 20 कॉमन लिया तो root 3 plus 1 is equal 4 to root 3 minus 1. 5t. Yeah. It's C. So 4 into root 3 plus 1. कौन सा c है? ऊपर ये आए तो Oh, c yeah. c बोलते My हैं. bad. A is answer, Krishna. Good. JEE मेंस क्वेश्चंस अच्छे से करो. आई एम नॉट हेल्पिंग, दैट्स व्हाई. आप ट्राई करो. तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो. एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इक्वल टू एम में लगो. इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, दिस साइड फोर्स इक्वल दिस साइड फोर्स बोल के लगाने का. ओके चलो कॉपीड ट्राई करो. देखते करो. ऑप्शन सेल गियो. सी हार्ड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ. ये निकाल के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दे दो बोले तो दूंगा, बट ट्राई करो. Six to 1.54. Try and tell them. This 2022 JEE means. So what is saying? A uniform chain of mass m and length L. Total length is L, capital L, and its mass, total mass is small m. Passes over massless pulley. It is released from rest with a part of the length L hanging on one side. देखो L is hanging, small L is hanging this side, and remaining कौन सा है? L minus L length is hanging on the other side. Okay. At certain point time where L is equal to L by X. At certain time के बाद L is when length L is equal to L by X time में the acceleration of the chain is G by 2. At the time what is the value of X? When I released, what will happen? ये इधर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा with some acceleration के साथ. He is telling the at the time acceleration also they given G by 2. The value of X is how much? When L is equal to what? L is equal to capital L by X. No solve. Sir, can you explain what you mean by L is equal to capital L by X? See, ये L total length is how much? Tell me. L, capital L. Capital L, right? When I released, it started falling. Yeah. At this point में L value L by X time में he is telling he is given acceleration also given at that time. मतलब इस मतलब नीचे गिरने समय when this point time में he is telling he has given acceleration is G by 2. The value of X is how much he is telling. So at this time में he has given acceleration. मतलब इसका acceleration is G by 2. इसका acceleration is G by 2.
So the other side is L minus L only, no? This side is L minus L. But Okay. L value here क्या है? L by X meaning है in that. Okay, sir. Try करो. मानो. One second, I'm trying to think. देखो थोड़ा हेल्प करूंगा. यू ट्राई. सपोज मान लो टोटल मास m is m, right? Small m. And length, total length is capital L. Mass per unit length will help you for mass per unit length. Is a mass per unit length. You tell me what is the mass of this length? इस चेन का लेंथ कितना होगा? मास ऑफ लेंथ. सी आपको व्हाट फोर्स एक्टिंग ट्रेल में by इस चेन X. के. हाँ, M by X. m by x नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल l by x बाद में सब्स करेंगे. सी ये लास्ट में सब्स करेंगे वैल्यूज का. सो व्हाट इज टेलिंग l का. यू टेल मी व्हाट इज द मास. इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? टेल मी एनीबॉडी. So the mass of that side will be M into L, capital L minus small l by capital L. And इससे the ले रहा other हूँ side इसका. will be, no sir, हाँ that side will be M by X. The longer side will be M by X. The smaller नहीं, side x will वाला be, छोड़ दो, लास्ट में करेंगे. फर्स्ट टेल मी l का, स्मॉल l का कितना है? स्मॉल so l the का mass will be M into capital L minus small नहीं. l by capital L. इस स्मॉल लेंथ का आई एम टेलिंग. इसका मास इज हाउ मच? कैपिटल उधर क्यों जा रहे हैं? इधर स्मॉल एल का मास इज हाउ मच? आई एम टेलिंग स्मॉल एल का मास. Sir, you should get it in both variables to equate it, no? नहीं नहीं ऐसे नहीं. देखो मास पर यूनिट लेंथ मींस व्हाट इज द मीन? टेल मी. एल लेंथ में टोटल मास इज m. स्मॉल एल लेंथ में कितना है? कितना है? यूनिट मेथड करो. सी एल लेंथ में स्मॉल एम मास, स्मॉल एल लेंथ में कितना है? और इफ यू वांट यूनिट लेंथ में कितना है? वन यूनिट लेंथ में है सो मच. वन यूनिट लेंथ में m by l. l यूनिट लेंथ, l लेंथ में m by l times l. This is the mass. So what is the force acting on this in this way is m by capital L into small l. This is the force acting on this chain. See, Joshit, understand करो. The given total length का mass है small m. One unit length is how much? Unit meter लगाए तो m by l. m by l is the one unit length. Okay. See, 10 chocolates, 100 rupees. One chocolate is how much, Joshit? 10 chocolates, 100 rupees. One chocolate is What, sir? I didn't understand. 10 chocolates, 100 rupees. One chocolate is how many rupees? 10 rupees. कैसा है? You divided, right? 100 by 10 you divided, right? Yes, Right? sir. I say, देखो total length is small m. One unit length is, मतलब one chocolate is how much means you divide this by this. This is a mass per unit length. If I know one chocolate is much, L chocolates is how much means m by L times of L. M by L times of L. This is a mass. Can you tell me what is the mass? What is the weight of this one? Weight on this one? Tell me. M by L times L minus L. This is a mass. This is understood, everybody? See, we have to know the forces. This force, this force. M by L times L minus L, M by L times of L. ये दो फोर्स मालूम समझ में आया? हाँ प्रणव कुछ किया? मानो कुछ किया? हाँ इधर तक Sir, I अंडरस्टूड got a क्लियर? point equation, but I'm not able to solve it. मतलब ये में क्वेश्चन ऐसे आएगा. ये नाम के वास्ते नाम के क्वेश्चंस किया तो कैसे? So can I give a guess? I'm not getting. No, guessing नहीं है कुछ नहीं. See, till here understood or not? See, what is the force? See, without knowing the force, you can't apply the free body diagram. That's why first we have to know the force. What force is acting towards downwards? Mg, right? M is how much? Total mass is m.
here not a total mass नहीं है Yeah, ना. yeah, sir, I understood the हाँ, diagram. m by Sir, l m times by of l into capital L minus small l is force. this is force. Okay. Okay, and now acceleration is downward side. ये ज्यादा weight है ना, ये इस तरफ जाएगा. So acceleration is like this. ये लगाओ, ये ऊपर जाएगा acceleration. Now apply net force equal to ma. नेट फोर्स इक्वल एम में लगो, इस डायरेक्शन में लगो. इसका नेट फोर्स क्या होगा टेल में? इसका डाउनवर्ड फोर्स इज ये वाला. देखो, इफ यू वांट टू अप्लाई टेंशन, ए टेंशन, राइट? टेंशन इज नथिंग बट m by l टाइम्स ऑफ m, राइट? सो व्हाट इज द फोर्स टेल में? व्हाट इज द नेट फोर्स इक्वल m में लगो, कितना आएगा? अपवर्ड फोर्स. सी एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स, राइट? सो क्या टेल में? व्हाट इज द इक्वेशन? m by l टाइम्स l minus l. Net force equal to ma. Okay, minus upward direction is tension, right? Tension is nothing but this only, m by l times small l is equal to mass into acceleration. Till you get understood? I applied for this one. I applied this for this one. Net force equal to ma. This force minus this force is equal to m into a. Clear? Understood? Now solve. Now Sir, I solve. got x equal to 4. देखेंगे, आप करो. Now solve करो and find the acceleration. m cancel. So therefore L minus L by capital L minus L by capital L is equal to A. What is G? Acceleration है, हाँ, So what is G? G आ, G is 10. G किधर है? Okay. Okay, G by 2 is G is 10. Now tell me, now substitute what is given acceleration is, what is in here? mg, right? mg, your G वर्कआउट हो गया, mg and this also mg, right? G, ये G भी बचा है ना, ये पूरा G भी बचा है. Now tell me, acceleration how much they given? At the acceleration is G by 2. When acceleration is G by 2, what is the value? At the time L equal to capital L by x. Okay, now A के जगह में G by 2 लगो. G into L minus L by L minus small l by capital L is equal to A के जगह में G by 2. So G cancel. Now capital small l के जगह में L by x लगाओ. Small l के जगह में L by x लगाओ. कितना आएगा? नो सॉल्व करो. You will get the value of x. You will get the value of x. So small l के जगह में L by x. So L minus L by x by L minus Yes, sir, I got 4. L by x by L by x by L is equal to 1 by 2. Yeah. So if you solve, how much you got? Krisha, how much you got? Sir, I did some calculation error. I'm getting a fraction. Now इसका solve करो. Find x. देखो L कॉमन लूंगा, L कैंसिल हो जाएगा. So क्या बचेगा? 1 minus 1 by x minus 1 by x is equal to 1 by 2. So can't we just said L minus 2L by capital L is equals to 1 by 2? Anything. So both are 1 minus 2 by x is equal to 1 by 2. So x minus 2 is equal to x by 2. So 2x 4 is equal to x. So x is equal to 4. Sir, I got X is. I'm getting L, sir. I'm not able to cut L. Because we substitute small l के जगह में capital L by x, right? So wherever small l is there, capital X by L. देखो. Oh, sir, I got that. Sir, I got that. But I'm getting X as 1. No, x is 4. देखो solve किया ना. One second, let me check. So जेई में क्वेश्चंस का आपको डरने का नहीं, इसमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा. देयर इज नो सिंपली कंफर्मेशन बोलते हो आपको एग्जाम गया काम से आउट ऑफ. Sir, I did different method, sir. which method you followed? Sir, I took the mass of small l as m by x and the mass of L minus L by as m minus X is m what by you x. took. M by x means what is x? So they asked to find value of x. So then I can Yeah. use A is equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. Okay, but generally क्या है, इधर से स्टार्ट करो. They given mass m on length l, right?
उधर से स्टार्ट करो, आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ. So I calculate because I want to apply Newton's second law. Net force equal to ma. उसके लिए आपको इधर bottom का mg force we don't know. So m कितना? We cannot take total mg. इधर chain इतना कितना mass है उतना mg only we should take. That's why mass per unit length help लेके इधर भी force किया and इधर net force equal to ma लगाया, solve कर दिया. And a के जगह में g/2, l के जगह में l/x लगाया तो आया. So twisted questions, hard questions I choose and I'm giving. Try to do. Easy question आपको, you're expecting this one pulley is given, one block is this block is this one, इसका acceleration is how much they will ask, this one. हाँ, ऐसा question small बच्चे करो without help करो. but think करो आ जाएगा. I'll give options if it is there. These are numerical based questions. Perfect number आएगा, number में try करो. System has 10 balls. Just know 10 balls are there. Each of mass 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg. Some masses are there. Are connected with a massless and unstretchable string. The system is allowed to slip over the edge of the smooth table as shown in figure. देखो ऐसा slip हो रहा है, नीचे नीचे गिर जा रहा है. Okay. The tension the string between the 7th and 8th ball is when 6th ball is just about 6th ball just loose. देखो 1 2 3 4 5 6th ball. देखो 1 2 3 4 5 6 7th ball. So he's telling the tension between the 7th and 8th ball. 8th and 7th ball के बीच में टेंशन कितना है? When sixth ball is just about to leave, मतलब ये sixth ball इधर है. So 7th 8 9 10 इधर तक. So इधर ऊपर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5. When the sixth ball is just about to leave, he's asking the tension between the 7th and 8th ball. 7th and 8th ball. So 7th and 8th, ये पूरा string से attached है ना? Attached है ना? So 7th and 8th ball का tension कितना? This is 7th, this is 8th. The tension is how much at that time? Ball पूरा ऐसा attached है, और नीचे गिरता जा रहा है. When the sixth is just about to leave, 7th and 8th ball time में उसका ऊपर tension कितना है? Sir, but since the string is same, won't the tension be same throughout the string? टेंशन इज सेम बोले तो देखो इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो देखो मास इज तेरा, देखो इनडायरेक्टली इट इज लाइक एक्टिंग लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ मासेस. देखो इसके ऊपर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स? व्हाट इज द फोर्स एक्सेलरेशन? फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स by net mass. Yeah.
Net force is how much? Net mass is how much? Total mass is how much? 20. Okay. A net force is acting कितना होगा? Net force means इधर कितना So it'll force be 5 acting? into 5 नहीं 100. 6 balls है ना? 6 into 2 into 10. 6 mg. 120. C. Okay. 6 mg, right? Normally. So कितना? 120 yeah? 120 means axis 120 मतलब divide करो कितना आएगा? 6 into So we mass get is 2 acceleration is into 6. 10. 6 meters per second square. Okay, acceleration मतलब नीचे उतना acceleration से गिर रहे हैं 6 meters per second square, right? इधर भी 6 meters per second square. Okay. Now here tension चाहिए ना? Net force equal to ma लगो. Net force equal to ma. Net force is how much? इधर see इससे 28. पहले कितना है? हाँ 28. 28 wrong. 7th and 8th right? मतलब इधर only 9 10 मतलब इधर एक ही बॉल रहेगा ना? 7 8 9 10 right? हाँ. Now tell me इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू एम में मतलब नेट फोर्स इज टी इज इक्वल टू ये कितना मास है? ओनली 3 आर हाउ मेनी मास? टेल मी एम ए राइट एम इज हाउ मच? एम इज 2 kg कितना बट कितना है मास? ये टोटल मास इज हाउ मच? टेल मी समझ में आ रहा है? नेट फोर्स इक्वल टू एम में नेट फोर्स इक्वल टू 3m इंटू ए. सो कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2. The acceleration is so much 6. So 6 into 6 is 36 newtons. This answer. देखो here ये mass string ऐसा it is like acting like a mass of string. Okay. देखो 3 strings are there 8th 9th 10th and इसके बीच में one more string is there 7th. ये टेंशन चाहिए. Acceleration मालूम है 6. So अपने net force equal to m में net force T इज इक्वल टू एम कितना? कौन सा एम यूज करने का? ये तीनों मासेस का एम लेने का. ये तीनों का मासेस का कितना है? तीनों मासेस 6. Oh, sir, answer is 36, right? 36 आंसर. Oh. So 1 second. कुछ अंडरस्टूड पहला? सो ऐसा Okay, क्वेश्चंस sir, very करो. easy. चलो नेक्स्ट करो. जो इनिशियली अब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा 1-2 क्लासेस के बाद आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द डायरेक्टली इक्विलिब्रियम के बाद वी आर एंटर्ड राइट. थोड़ा टाइम लगेगा कि मोर हार्ड है बट यू विल अंडरस्टैंड. टाइम लगेगा टेंशन मत ले लो. ओके. Go for. 3 equal weights of masses 2 kg each hanging on a string passing over a fixed pulley. देखो 2 kg 2 kg 2 kg they are hanging on a fixed pulley. What is the tension in the string connecting weights B and C? B and C के बीच में tension T चाहिए. So in which direction is acceleration acting? but किस तरफ जाएगा? You don't tell me. So won't it go in direction of BC? हाँ हमारे जो वेट है वही डालेगा ना. So use the freeboard diagram and try to check. Definitely इसका acceleration downwards. A ऊपर A. So there is a tension between B and C only, right, in the question. हाँ B and C के बीच में tension चाहिए. Sir, they both are in the like A and B are connected in the same string only, right? So can I A say and that? B, A and B are same string, but this is not same string, right? Sir, why not?
अरे बी बॉक्स के बाद ओनली नीचे टाइप किया ना, Oh, so it'll be two ऊपर different. Oh, but why for A we are taking acceleration upwards and for B we are taking it downwards? Can't we take both as in one direction only? अरे विच इज वेट इज मोर, टेल में इस तरफ वेट ज्यादा है, इसमें वेट ज्यादा है। हाँ, वो नहीं बोलेगा, वो लोग ऐसे देखने का, समझ में आने का। Sir, I have a doubt. ये टेल में Sir, for a free body diagram of B, will it be mg minus t1 minus t2 is equal to ma? देखो इसके ऊपर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, 2G, Yeah. ऊपर टेंशन T1 बोलो। ओके, ये वाला भी T1 है, Yeah. ए वाला 2G है, एंड ऊपर T2 है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन सा है? एक्सेलरेशन डायरेक्शन में द फोर्सेस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, सो T1 प्लस 2G माइनस T2 इज इक्वल टू ma। दिस इज बी का इक्वेशन। Sir, And but isn't t1 acting upwards? which one? Isn't T1 t1 ना? acting upwards? Why T1 is acting upwards? B के respect में tension is always away from the point, so downwards है। But to be And इसका T1 since इसका acceleration क्या होगा? T1 2G 2g minus minus t1 T1 equal is to equal to 2A. 2a. Now solve. So for block A, it'll be t1 minus 2g is equal to 2a. So for block A 200 by T2 is equal, इसका acceleration is 2G, so ऊपर T2 minus 2G is equal to A. so 200 by 3. 200 by the decimal बोलो। Sir, 6.6, no, 6.6. No, wrong. Sir, ये anywhere 3 close. इक्वेशंस आ गया, देखो 3 इक्वेशंस आ गया, 3 इक्वेशंस का यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। नो थर्ड 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करो, एलिमिनेट वन वेरिएबल का एंड सॉल्व। देखो G10 ले लो, कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इक्वेशन G10 लाया तो कितना? सो 20, सो T1 प्लस 20 माइनस T2 इज इक्वल टू A, एंड G20 लिए तो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू A, एंड ऊपर G20 लिया तो 10 लिया तो 10 इंटू 20, राइट? T2 माइनस 20 इज इक्वल टू A। एक्सेलेरेशन कैसा आएगा? आई टोल्ड यू वन शॉर्टकट आल्सो, राइट? वन पुली इज देयर, 2 ब्लॉक्स आर देयर, व्हाट इज एक्सेलेरेशन फार्मूला? m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. सो ये वाला टोटल मासेस यू कैन कंसीडर, राइट? ऐसा भी कर सकते हैं ना, टोटल 4 kgs लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पेन करो, एक्सेलेरेशन कितना आएगा? So is the answer 50 by 3? डेसिमल Sir, 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 20, yeah, 26.6. यस करेक्ट, दैट इज आंसर। so I got acceleration as 2. Acceleration as 2, wrong. 2 by m1 plus m2, so 6 1 by 3 into 10, 10 by 3 आएगा। अरे Sir, m2 20 फॉर्मूला by यूज 3. करो, m2 minus m1 by m1 plus m2 into g। m2 means second body का, so total mass is how much? 4 kg, so 4 minus m1 is But 2। sir, I use the exact same as what you wrote. I got A as 2. ये 2 कैसा आएगा? विल सी फर्स्ट, इसका भी Yes. देखेंगे, इसका भी देखेंगे। ये इधर लगाओ फर्स्ट, m2 minus m1 is 4 minus 2 by 4 plus 2 is 6 into g, so 2 by 6 is how much? 1 by 3, so g by 3, so 10 by 3 is the acceleration। Sir, I got 20 by 3. 20 by 3. acceleration,
Sir, I didn't use that formula, sir. I हाँ used I did the equation Shewhart diagrams, and then later, sir, in that T1 T2 equation, the first equation में I substituted T1 value and then T2 value I put. So in देखो the first equation, I put this second equation and third equation. okay, this is the first equation, second equation, third equation. इसका बोलो three body हाँ, diagram. the first equation में हाँ I put the second equation का T1 value हाँ, so and the from this third देखो equation का T2 20 value. minus 2a is equal to t1, हाँ, right? Substitute करो इसमें. So t1 is how much? 20 minus 2a plus 20 minus t2 is equal to a. So कितना होगा? so substitute T2 value also over there. T2 value is 2a plus 20, right? So T2 is 2a plus 20, right? sir, we're getting correct. Wrong क्या? हाँ मतलब g Then by how did 3 I get the correct answer then? नहीं guess में आ गया है थोड़ा इसमें. देखो No, sir, I used the same answer. g by 3 is a correct acceleration. हाँ आप बोलो मानो. Sir, see. So first you wrote T2 minus 2G is equals to 2A. And you wrote T plus 2G minus T1 is also equal to 2A. Yeah, that one. हाँ T2 minus 2G is 2A and T1 plus 2G minus T2 is equals to 2A. okay. I equated both of them. हाँ So I got 2T2 plus T1 plus minus 4G is equals to 4A. आपको g पहले g by 3 नहीं आया ना आप. So I got AS2. yes to है नहीं. wrong. See मैं क्या this equations are same only. g के जगह में 10 लगाया. Sir, Okay. wait, sir. Oh, never mind. So continue. g के जगह में 10 लगाया. That's why I substitute this one. देखो t1 plus 20 minus t2 equal to a. So And you get second one? AS 10 by 3. हाँ 10 by 3. Sir, I did calculation mistake. Now acceleration आने के बाद substitute in one equation, find tension. Akusha, very last. But I'm still lost at acceleration only, sir. See that's why I'm telling you. Whenever pulley is there, two blocks are there. Use the shortcut formula. We derived also already. M2 minus M1 by M1 plus M2 into G. That is the formula. Remember करने का. कभी pulley and दो block है तो. So M2 is nothing but total mass. Total mass is how much? 4. Simply one step में आ जाएगा. इतना time waste नहीं करने का. So 4. T 40 by 3. हाँ 40 by 3. That's 50 by 3 आएगा. So Yeah. G. So it is 2 by 6 is 1 by 3. no, sir, it's wrong, 10 by sir. 3 meters per second square. This is the acceleration. Sir, it's a substitute in 20 minus T1 equal to 2A. 20 minus T1 equal to A, right? Yeah. So So you देखो, get 20 20 minus minus T1 20 by 3. equal to 20 by 3. Okay. Yeah. 20 minus 20 by 3 is 40 how by much? 3, not 50 by 3. So that's 40 by Sir, 3. I got 50 by 3 by using 40 by 3 is 20 how by much? 3, sir. Decimal में बोलो. 40 by 3 is 13.33. 13.33. Yeah. No, answer wrong. 26.66 are there. So, but even you got the same answer. 26.66 you got, huh? No. Sir, I'm getting 40 by 3, but नहीं समथिंग देखो a इक्वल टू 10 by 3 तक राइट है. सो इसमें सबका t1 इसकी इक्वेशन को देखो एक बार. सेकंड इक्वेशन का वेयर विच वन वी यूज्ड t1 का है तो ये वाला 2 kg का राइट. 2g minus t1 is equal to ma 2a correct only. So 2g 20 minus 20 by 3 देखो 20 minus t1 equal to 2 into a right. 20 by 3 60 minus 20 40 by 3 only correct only. So according to this 60 minus 20 20 is 40 by 3. This is the answer. yeah, sir, but you did 50 by 3. This is a So it's mistake. wrong here. Okay. समझ में आया वाला. So acceleration right any one value में substitute तो वह आ जाएगा right any equation में. T2 value नहीं मालूम है we cannot substitute this one. T1 में substitute किया. T1 is asking right. T1 only is asking. That's why I'm substituting here. So 40 by 3 is the answer. कृष्णा है ना. Something wrong. इसलिए 50 by 3 आपको आंसर wrong है. आंसर कैसे है 40 by 3 is answer. चलो. प्रॉब्लम विथ स्ट्रिंग विथ मास. ओके अभी तक मासलेस स्ट्रिंग है. मासलेस स्ट्रिंग है. नो मास है पूरा स्ट्रिंग को. सो कैसे सॉल्व करेंगे देखो. हाँ
छोटा क्वेश्चन है, ट्राई करो. A block of mass capital M is being pulled with the help of a mass small m. देखो ये पूरा स्ट्रिंग का मास है स्मॉल m, इसका लेंथ है l, टोटल लेंथ है l. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू ब्रेक कंपल्सरी आपको मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, द हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied by the man on the string F. F से I'm applying a force. Okay, determine the force exerted by the string on the block and acceleration of the system. Force exerted by the string on the block and acceleration of the system. Tension force is asking directly. Solve करो. In terms of capital F में चाहिए tension force in terms of capital F. So this is a force, tension is nothing but this is a force exerted by the string on the block. Block के ऊपर लगने वाला tension force. And moving with this acceleration, right? Acceleration से जाएगा ना. Sir, F is not tension. No, F is not tension because a massless rope नहीं है, ये mass rope Okay. है. That's important. So we have to consider force vector also in that direction. In that direction, but you are applying for you. I want this one, right? This section लेके free body diagram draw करो. This section लेके. He want this force, tension force. So ये section net force equal m लगाओ. So then how will you get it in terms of F? That time separately आपको free body diagram draw करना पड़ेगा. Try करो. रस्सी में ब्रेक किया तो दिस इज ब्लॉक m एंड इस इधर टेंशन T. ये रस्सी का भी इधर ब्रेक किया ना हम लोग, ब्रेक करने से आपको इधर भी टेंशन T है. दिस F, इधर एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है. दोनों को इक्वेशन करके सॉल्व करो. समझ में आ रहा है? रस्सी उधर कॉर्नर में टेंशन इस तरफ भी है, इसका टेंशन इस तरफ है. नेट फोर्स इक्वल m लगाए तो सो T इज इक्वल टू m a. एंड इधर इधर क्या आएगा? F माइनस T इज इक्वल टू m a, स्मॉल m a. नाउ ट्राइंग टू फाइंड टेंशन. तो a इज हाउ मच? सब करो. T के जगह में सब्स्टिट्यूट दिस वन. सो F माइनस कैपिटल M A is equal to small m a. So F is equal to m plus small m into a. So a is equal to F by m plus m. Now substitute this acceleration in this. So tension is equal to m into F by capital M plus small m. This is answer. First answer. Okay. No second one करो. मानो करो. Second one, find the tension at the midpoint of the string. Exactly at midpoint में find the tension. So mass of string will be m by 2. m by 2. Good. m by 2 दोनों लगाने का. Midpoint में exactly midpoint में. See, this is a mass string, मानो. This is a mass string. अभी तक के massless. Try करो. So find the tension in the middle of the string. So middle में कैसे रहेगा? This is a mass m and इतना तक string है. So इसका mass is m by 2. आधा हो गया ना? And इसका tension, इसका length is also l by 2. Okay. And इधर इसके ऊपर tension T1. इस तरह. बीच में कट किया ना, बीच में कट करने समय इधर भी force T1 है. And remaining length का mass है is also m by 2. And इसका length is l by 2. And tension is T1. I'm applying a force F. Then you should find in terms of F. I want answer in terms of T1 in terms of F. Capital M, small m and F terms में आएगा. So you'll get capital M plus small m by 2 into F by capital M plus small m. ये correct.
find tension in the middle. Sir, No. the what was, oh shit, I forgot. The net Yeah. force. Sir, the tension, the total mass when its midpoint will be capital M plus small m by 2 only, right? Yes. So net force equal to ma. देखो net force acceleration direction में the net force is T1, right? So net force is equal to m plus m by 2 times a. So now either भी equation solve करो and substitute will get the value of T1. So इसका कितना होगा? So what is x? हाँ? So what is x? A distance, some x distance में, not midpoint. Somewhere at Okay. distance x में, I will break then that में. हाँ. Now acceleration is net force by net mass apply करो, solve करो, आ जाएगा. इसका equation लिखो, इसका equation will be net force equal to m, right? So F minus T1 is equal to ma. So m by 2 times of a. Now इसको ये लगा, is telling to find the tension, right? So T1 चाहिए. So ये दोनों equation solve किया तो you'll get the value of this one. So answer कितना आएगा मालूम है? ये दोनों समझ में आया equation कैसा जोशित समझ में आया ये वाला? देखो आपको एक Yes, छोटा सा इक्वेशन कैसा लेना आपको अंडरस्टैंड होने का जोशित. देखो यू टेल मी दिस इज मास m, this is f1, this is f2 and this is acceleration a. Tell me how to apply net force equal to ma. Net force equal to ma. Net force means this side force, which one we should take as positive, which one we should take as positive? Acceleration direction में we should take as positive and opposite direction of acceleration we should take as negative. Tell me क्या आएगा? f1 minus f2 is equal to ma. ये लिखना आने का आपको इक्वेशन. नेट फोर्स इक्वल, देखो नेट फोर्स इक्वल टू ma. नेट फोर्स मींस टोटली which is positive, which is negative. One should be positive, one should be negative. So which one कैसे consider करेगा? Acceleration direction में you should take as positive. Okay, tell me. Suppose mass m is there. I am applying a force f1 and this is f2. Now acceleration like this. Now tell me the equation, Joshit. Equation क्या है? sir, F1 minus F2 is equals to ma. Khatam. Wherever acceleration is there, that direction you should take as positive. Now all equations we are doing that only. We are drawing the freeboard diagram and net force equal to ml लगा रहे. That's it. And solve करो. So the length, so for the C question, the length will be L minus X, right? If I take L the minus X. Yeah. capital L minus In X. Yeah. tension, will we have L? Like in the answer, will we have L? Tension, yes, रहेगा. Sir, it will be capital M plus small m minus small m x by L into F by capital M plus small m. Right, very good, super. So what should I take mass of the string as? Like in the C part. देखो mass per unit length. 1 unit length में mass per x length में x लेने का. This is one part and remaining will be L minus x, m by L times of L minus x. This second part का mass. See, mass per unit length into whatever the length is there always. So whatever the length is there, L minus x है. ये वाला x है. This is the mass. समझ आ रहा है? जोशित देखो इसको में is asking find the tension at the midpoint of the string. Midpoint of the string means at exactly middle point में I want to find the thing. Okay. So उसके लिए what you are doing? Middle point में इस तरफ total mass is m. ये I am splitting into two parts. देखो mass m है. ये remaining string है ना. ये string I drew. And इसका mass is m by 2 because middle में cut किया ना m by 2 and length is L by 2 and is moving with acceleration a. So and tension is T1. So इसका equation क्या आएगा? Tell me. Only one force is acting. Final T1. answer. So T1 is equal to capital M plus आया ना? हाँ, yes, correct. Capital M plus m by 2. This is the total mass. See, net force equal to ma. Net force is only one force. Is equal to m is what? Capital M plus m by 2 times a. This is one equation. And second equation क्या बनाया? F minus T. देखो, you will tell me what is the equation net force क्या होगा? Tell me. T1 minus F, F minus T1. In this में acceleration like this.
क्या आएगा? F माइनस T1 इज इक्वल टू m/2 टाइम्स ऑफ A। आपको सॉल्व किया तो यू विल गेट द टेंशन इन द मिडिल पॉइंट, T1 आ जाएगा। तो मैं सिमिलरली ये वाला Yes. भी, हाँ, थोड़ा आपको क्वेश्चंस करके मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको डर लग रहा है, बट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आपको आपका मटेरियल में पहले सॉल्व करो, देन थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस में फिर से एक बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, Okay. सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग फॉर ए स्प्रिंग फोर्स। Okay.